जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि दोनों ममालिक की फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ रही हैं, ताहम मुस्तकबिल में कशीदगी का इम्कान हो सकता है। माजी में कशीदगी सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद रहती थी, लेकिन इस बार भारत ने पहले शहरों को निशाना बनाया और फिर बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाहरियत की। ये इंतहाई खतरनाक है। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे में सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। ये फैसला बगैर किसी सबूत के आया। पाकिस्तान ने आजाद तहकीकात की पेशकश की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने ये इकदाम किया। इस तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई इकदाम नहीं किया गया, ताहम सूरत हाल इंतहाई खतरनाक थी। We have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. In India as well, both sides. Yes, both sides. Okay, it so has both to be sides are in the process. Yes, both sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक की फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ रही हैं, ताहम मुस्तकबिल में कशीदगी का इम्कान हो सकता है। माजी में कशीदगी सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद रहती थी, लेकिन इस बार भारत ने पहले शहरों को निशाना बनाया और फिर बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाहरियत की। ये इंतहाई खतरनाक है। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे में सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। ये फैसला बगैर किसी सबूत के आया। पाकिस्तान ने आजाद तहकीकात की पेशकश की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने ये इकदाम किया।